is one name for the bar bending details or the measurements, but mainly we are dealing with that one item of work, which is nothing but the reinforcement, and which is very important from our all estimation, execution, and the payment. I have told you that after you complete your graduation and whenever you go for the job, maybe government, private, or except टीचिंग, तो आपको वर्क में ये आइटम को टैकल करना पड़ता है, जिसको हम रीइंफोर्समेंट करके बोलते हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट जो ड्राइंग में दे दिए जाते हैं, तो वो बेस्ड ऑन दैट डिटेल्स गिवन, यू हैव टू आइदर कैलकुलेट द क्वांटिटीज फॉर द detail estimate purpose, which is being utilized for the tender and other things, which we'll be learning in our next unit. Tender, the contract, etc. And then during execution, and as a sites engineer, you will be responsible for properly laying all this reinforcement, है ना? Because this reinforcement is worked out based on all those bending moment and the shear forces, etc. From the safety point of view, ultimately from the safety point of view of the structure. So the laying the proper quantity of reinforcement is important, and later on, after the work is completed, you have to pay it to the contractor for the work he has done. So therefore also you must be aware. So let us move. Yesterday we have seen one example on the beams. Okay, how to calculate the reinforcement in the beams. थोड़ा सा कम ज्यादा होते हुए हम और भी बीम्स के लिए वगैरह वैसे उसको करेंगे। समय मिला तो और एक आधा हम बीम का न्यूमेरिकल देखेंगे। पहले हम स्लैब का देख लेते हैं। वी विल सी अनदर कंपोनेंट ऑफ आवर civil engineering work, that is this slab, reinforced concrete slab. How to calculate the reinforcement, how to judge the length, the span, and the width, etc. And then we will see one for the footing foundation. Then with time we will see one for the कैंटिलीवर छज्जा, और एक आधा बीम का देखते हैं, और फिर इस यूनिट को हम इधर खत्म करते हैं। एज हैज बीन टोल्ड बाय अमेय सर on your this thing, on your WhatsApp, please go through the YouTube and the numerical which I am teaching you just now. Write it down, write its solution, and submit it. The link I will provide it. Okay, this is treated as your submission of one of the part of assignment. So let us move further. The example is like that, and again practically also आपको ऐसा experience आएगा ही. Prepare a detail estimate of RCC roof slab. 3 meters clear span. स्लैब का क्लियर स्पैन है 3 मीटर एंड 6 मीटर्स लॉन्ग, यानी प्लान में यदि देखते हैं तो वो स्लैब की लंबाई है 6 मीटर, लेकिन जो स्पैन है जिसमें हम रीइंफोर्समेंट, मेन रीइंफोर्समेंट जिसको देते हैं, उसको स्पैन करके बोलते हैं, या बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग फोर्सेस और शियर फोर्स को वर्कआउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्पैन. So clear span is 3 meters, 6 meters long from the as given in the drawing of the RCC work, including आपको centering निकालना है, shuttering, steel reinforcement and the concrete also. Prepare the detailed estimate of this, shall be taken separately. तो इसके लिए हम कैसे ये 4-5 आइटम को, लेकिन मेनली रीइंफोर्समेंट को, ऑल्सो प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ बार्स, रीइंफोर्समेंट बार का जो शेड्यूल है उसको भी प्रिपेयर कीजिए, ऐसा करके बोला है. ठीक है. अगेन द क्रॉस सेक्शन इज शोन. आई डोंट नो यू हैव द लैपटॉप और द मोबाइल, उसके ऊपर आपको इतने अच्छे से दिखता है कि नहीं. द क्रॉस सेक्शन इज गिवन 3 मीटर क्लियर स्पैन. It has been given that alternate bars are bent up. Those bars alternate bent up are 12 mm dia with 12 centimeter center to center. Distribution bars are there. They are 6 millimeters phi or diameter, 18 centimeter center to center. Okay. Then clear span, as I have told you,
the bearing that is support to this slab is 15 centimeters on both side. Bearing आपको सबको मालूम है. The slab which rests on the brickwork, that is 15 centimeter, or any support that is 15 centimeters. 3 meters is the clear span. You can see into the plan again. If you are on the laptop, you can see it very clear that all the outer edge of the slab, the main reinforcement, their spacing, alternate bent up, etc. all are shown. Main bars 12 mm fire diameter, 12 centimeter center to center, distribution bars, etc. all are shown here. The alternate bent up bars, okay, the bars are alternately bent up on both sides. ऐसा है, यानी एक बार बेंट अप है तो दूसरा स्ट्रेट है, तीसरा बेंट अप है तो चौथा स्ट्रेट है. Therefore it is called as the alternate bent up. But the bending is on both sides, that is given. और बेंड जो किया है इन ड्राइंग, इट इज गिवन 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इनर सपोर्ट. यानी जो सपोर्ट से 50 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड एंड 50 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड, द बार्स आर बेंट अप. ठीक है. अगेन in plan, bent up and the top bars have been shown in dotted lines. ठीक है. Bent up and the top bars are shown in dotted line. Again, for getting more details, you can repeat the same video, and maybe it is given in your notes. Let us move to our work. Now we will first find out the concrete quantity. The slab has got 3 meter clear span, 15 centimeter on one side, 15 centimeter on one side. So total length on of the span, including the bearing, is 3.3. Breadth, you can say 3.3 meters, plus 6 meters is the length of the slab. Okay, so 6 meters plus again 15 centimeter on one side and 15 centimeter on another side. So 6.3 meters is the length, and 3.3 meter is the breadth. That is the clear span plus bearing, and this is the length, clear length plus bearing, है ना. वो स्लैब जो है वो चारों वॉल के ऊपर रहेगी, all the four walls over which it is to be rested, but the span length is 3 meter. Another is its length on the adjoining walls, that is 6.3 meters. So therefore length into breadth, the depth of the slab is given as 12 centimeters or 0.12 meters. ठीक है. इसलिए concrete quantity of the slab will be 6.3 into 3.3 into 0.12, which is equal to 2.495 cubic meter. जब हम स्लैब की क्वांटिटी निकालते हैं, एस्टिमेशन पर्पस हो, तुम्हारे साइट पे वर्कआउट काम करना हो, या बिल पेमेंट के लिए, तो वी नेवर डिडक्ट द स्टील रीइंफोर्समेंट, है ना. उसमें से जो स्लैब की क्वांटिटी जो हम पे करने वाले हैं या एस्टिमेशन पर्पस के लिए है, तो फॉर कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट ऑफ द स्लैब, वी नेवर डिडक्ट द स्टील बार. वो आपको आखिरी के कॉलम में दिखेगा, एक्सप्लेनेटरी नोट करके आपका 8वां कॉलम है, उसमें है नो डिडक्शन फॉर स्टील बार्स. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड एवरी टाइम. ठीक है ना. हम स्लैब में से डिडक्ट करते हैं, कॉलम में से डिडक्ट करते हैं, कोई भी कंक्रीट एलिमेंट में से we never deduct the reinforcement. Now friends, let us move to the further part, which is regarding the calculation of the measurement of reinforcement. ठीक है. स्टील बार्स है, इंक्लूडिंग बेंडिंग, यानी सम बार alternate bent up bars है, ऐसा दिया है ना. So some bars are straight and some bars are bent up. So alternate bent up bars and that reinforcement bar का spacing जो है, that is 12 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर. ठीक है. तो यानी एक बार यदि सीधा है तो दूसरा सीधा बार जो है, स्ट्रेट बार, नॉट बेंट अप, one bar is straight. After 12 centimeters the another bar is bent, both bent, bent. Then the next bar will be straight,
straight because alternate bent ups are given. So the spacing of all the bars, that is the straight bars and the bent up bars, is 24 centimeter. It has been given here that 12 diameter main bars 12 centimeter center to center. तो मेन reinforcement में स्ट्रेट भी आया और बेंट भी आया. तो स्ट्रेट बार जो है वो अल्टरनेट बेंट के बाद में आएंगे. तो पहला स्ट्रेट बार फिर बेंट फिर दूसरा स्ट्रेट. सो 24 सेंटीमीटर. At the same time, the bent up bars will also be at 24 centimeters. Please try to understand because this judgment will help us to find out the number of bars. Therefore, I am insisting on this and which we should read from the drawing. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. So we have been given 12 diameter main bars, either straight or the bent. They are 12 centimeter center to center, means alternate 24 centimeter center to center. So let us first find the straight bars. है ना, इसमें कुछ सीधे बार है बॉटम में स्ट्रेट बार्स. आई थिंक यू ऑल मस्ट बी गेटिंग इट. The bars are straight, they are not bent, main bars, and the other is bent up. So let us find the quantity of straight bars. Their weight 12 फायर डायमीटर का जो स्टैंडर्ड वेट है वो जनरली 0.89 किलोग्राम पर मीटर हम लेते हैं. ओके, सो स्ट्रेट बार्स 24 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर. वी हैव 6.3. अब ये स्ट्रेट बार जो है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द स्लैब, नॉट ओवर द क्लियर स्पैन. ठीक है, ये कैसे रहेंगे, ये लेंथ के ऊपर में रहेंगे, लेकिन इसका स्पैनिंग क्लियर स्पैन की, इसकी जो लंबाई है वो तो स्पैन के उतनी, स्पैन प्लस सपोर्ट, लेकिन इसके जो नंबर्स है कितने आएंगे दैट विल बी ओवर द लेंथ ऑफ द स्लैब. सो देयरफॉर 6 meters we have been given the length plus 15 30 centimeters is the projection or the bearing. So 6.3 minus दोनों साइड का कवर 2 centimeters, 2 centimeter on one side, 2 centimeter, sorry 4 centimeters on one side and 4 centimeters on another side. So 6.3 minus 0.08, that is the length in which the bars are provided, divided by the spacing of the bar, that is 0.24. Okay, this will give you the number of bars excluding first bar. पहला बार छोड़ के सभी बार के नंबर्स आएंगे, इसलिए हरदम एवरी टाइम वी ऐड +1. ये भी नैक, ये भी आइडिया आप ध्यान में रखिए. कभी भी हम क्या करते हैं, वी ऐड नंबर 1 in that number of bars. Why? Because in calculating the quantity we मिस फर्स्ट बार. ये जो नंबर ऑफ बार्स निकाल रहे हैं ना, आप लगे तो एक आधा ड्राइंग के ऊपर में निकाल के देखिए, तो पहला बार हम इसलिए उसमें ऐड करते हैं. सो देयरफॉर 6.3 minus 0.08, you know what is 08, that is the cover on both sides. So the divided by 0.24 plus 1, ये जो आएगा ये भले ही फ्रैक्शन में आ सकता है, it may be 26.44, 26.5 etc, but you have to consider it in round, that is 27 numbers. Okay, so 27 bars, उसकी लेंथ है 3.44 because 3 meter is the clear span, plus 15 means 3.3. दोनों साइड में बेंट अप है, 2 side hooks are there, so that we know that we have 9 phi is the hook length on one side, both side 18 phi, 18 into 0.012, so 3.3 plus 2 hooks minus both side cover. एक साइड का कवर 4 सेंटीमीटर है, दूसरे साइड का 4 है, so both side covers are deducted. So 3.3 minus 0.08 plus 18 into 0.12, and that comes as 3.44. These calculations, if you do once or twice, you will be master of it. So therefore, for the 12 bar, the long bar is 27 into 3.44. Okay.
uh, after calculation you can find out the length of the bar. Then the second is the bent up bar. बेंट अप बार की हमें लेंथ निकालना है. फिर से वो बेंट अप बार आर ऑल्टरनेट बेंट अप. So 24 centimeter center to center. So again 6.3 minus 0.08 divided by 0.24, 24 center. But here we have not added 1 plus 1, because after the straight bar में once we have added 1, we need not add for the bent up, because after straight the bent will be there. So here only 26 bars. भले ही 25 point something आएगा, लेकिन 26 bars, 26 into its length. Now ये हमने देखा कि विदाउट द बेंट द लेंथ इज 3.44. ठीक है. नाउ विथ 45 डिग्रीज ऑफ द बेंट, with 45 degrees of the bent, we know that it is equal to uh, 0.45d. So 0.45d is the additional bent up length on one side, and on another side 0.45d. So 0.9d, d is the depth of the slab excluding cover. Slab thickness is 12 centimeters, minus 0.04 at top, minus 0.04 at bottom. So 0.08 will be deducted. So the remaining depth is 8 centimeters. है ना, 4 सेंटीमीटर गया तो 8 सेंटीमीटर is the center to center distance between the reinforcement at top and the bottom. ठीक है. So that 8 सेंटीमीटर जो है उसको अभी हमारा आया 0.9d. So 0.9 into 8. So instead of 0.9, let us थोड़ा सा हम और 0.9 लेना तो करेक्ट ही है, but we take it as complete 1. So it 8 centimeters of one depth we have added to this 3.44. हमने ऊपर में जो वर्कआउट किया स्ट्रेट बार की लेंथ. So the length of that bent up is 3.52 multiplied by 26. So total bar length is 184.4 meters of the straight and the bent up, multiplied by its length, its weight per meter, 0.89. So we get 164.12 kilogram. ठीक है. So this is the weight of the 12 mm phi main reinforcement. Okay, I think everybody of you, those who are present in the class, will understand what I tried to explain you. But again, it will be my request and instruction to you and conveyed to all the class that all we have solved today step by step is to be written with explanation and submitted to me on the link provided. तब तक कि आप लिख के रख दीजिए. Now we are moving into now the main reinforcement is over. It is very easy for the reinforcement calculation of the slab, because main reinforcement now only distribution bars. For the beam there are numerous bars, though the beam is small. But for slab they are very less. अभी distribution bars ये हमें दिए है, it has been given in the drawing that the distribution bars are 6 millimeters diameter, 18 centimeters center to center. Now these distribution bars are distributed over the clear span. क्लियर स्पैन में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट ऑन द लेंथ. है ना, थोड़ा सा प्लान अपने आंखों के सामने लाइए. अभी हमें बताया है कि दोनों साइड में द 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर द बेंट अप लेंथ और द बेंट अप पोजिशन फ्रॉम द सपोर्ट. है ना, तो 3 मीटर में से यदि हम 50-50 घटा देते हैं, द रिमेनिंग इज 2 meters. So the distribution will be over these 2 meters, and for the remaining we will have the space number of bars as per the spacing. या पूरी भी लेंथ आपने लिया, that is 3 meters plus 0.3 on both side, 15 3.3 minus cover 0.08, जो भी लेंथ आएगी डिवाइडेड बाय द स्पेसिंग 18 सेंटीमीटर प्लस 1 will give you the distribution of the bars. है ना. अभी यहाँ पे we have calculated it by
the method which I explained you just now. That is 3 meter minus 50 on left side, 50 on right side. So therefore 2 meters divided by 0.18, that is center to center distance, plus 1, 12 numbers of the bar. Their length is 6.33. Why 6.33? Because 6 on is the length of that bar, 15 centimeters is the कवर इज द बेरिंग. सो 6.3 उसमें से 0.03 यदि घटा दिया हमने, 0.04 ऑन बोथ साइड, 0.08, so that will be 6.22 plus again hooks are there, so that hooks is 18 times 0.06, so 6 plus 0.15 into 2 minus 2 into 0.04 plus 18, that is double the 9, 9 5 है hook length, so 18 into 0.006 which is equal to 6.33. if you are not providing the hooks तो आपको ये लेंथ ऐड करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हुक प्रोवाइड करे तो ही देना है, एक्स्ट्रा पेमेंट किसी को देना नहीं है, ना अपने एस्टिमेट में एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेना नहीं है. ये ना आजकल हुक नहीं प्रोवाइड करते हैं. मैंने आपको बोला था व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ टीएमटी, nobody has answered. So it shows how much interested we are. तो ये टीएमटी क्या है फिर से क्वेश्चन है आप. So 12 into 6.33, 6.33 how it has arrived, it is at the last column. अभी बॉटम बार्स टू साइड्स, ये 50 सेंटीमीटर का जो पार्ट है आखिरी का, and the 15 on one side, 15 on another side, that is 65 minus 0.08. इसमें in this part the bars will come as two bars, 3 bars on one side, 3 bars on another side, so 3 into 2, and also top bent up जो top है उसमें भी कुछ bars आएंगे, they are 3 in numbers, so 3 into 2, so bottom bars on the two sides of the length again same 6.33, top bars means the bars, distribution bars provided at the bent up मेन रिइंफोर्समेंट को जो परपेंडिकुलर है, तो वो भी 3 हुए, तो 3 into 2, 3 into 2, 6 numbers. Length is again same as the other distribution bars. So the total is 151.92 meters, is 6 mm pies length. As I have told you yesterday, the weight of the 6 mm pie is 0.22 kilograms per meter. है ना, ये स्टैंडर्ड वेट आपने कहीं तो भी नोट करके रखना चाहिए. So 151.92 into 0.22, which is equal to 33.42 kilograms. So total reinforcement पहले का 164.12 plus 33.42, 197.54 किलोग्राम और 1.975 क्विंटल और 0.1975 और 0.2 मेट्रिक टन, है ना. जो यूनिट में आप पेमेंट करेंगे, based on that you can conclude at the calculations. अभी इसके शेड्यूल ऑफ बार्स, ये जो भी हमने अभी तक के वर्कआउट किया है, हाउ वी प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ बार्स, that is being discussed here. This schedule of bars is for the execution purpose, है ना. जो हम कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए या जो भी बार बेंडिंग वाले लोग रहते हैं, to them we give these details. So main straight bars 12 mm diameter, its length is 3.22, है ना. 3 मीटर प्लस 15 प्लस 15 और उसमें से 4 सेंटीमीटर का कवर निकाला था, 322 सेंटीमीटर्स, 3.22 मीटर्स. एक्चुअली लेंथ हमने उसकी निकाली 3.44, यानी वो जब बार कट करेगा तो ही विल कट द बार ऑफ 3.44 मीटर्स और ही विल प्रोवाइड द मेन स्ट्रेट बार एज 3.44. 27 नंबर 27 बनाएगा वो, तो उसकी लेंथ इतनी आएगी 92.88. वैसे ही बोथ साइड बेंट विथ 45 डिग्रीज बेंट, अगेन 2 मीटर एट द सेंटर between the two bent up two cranks, 61 on one side, 61 on another side. So total is 3.52 including bend
And the hooks again multiplied by numbers. 26 less than 27, one number, its length, total length, and the weight by multiplying it by its unit weight. Bottom distribution bars again we have worked out as it is. जो हमने वैसे ही ये शेड्यूल ऑफ बार्स जब बनाते हैं तो इट इज इन दिस फॉर्म: डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बेंडिंग, लेंथ, नंबर, टोटल लेंथ। एक थोड़ा हम और उसमें वेट डायरेक्ट निकाला, लेकिन वेट पर मीटर एंड द वेट, that one column you can add, that is weight per meter and the weight, so that you will have the idea of what is the weight per meter of the various bars. Okay, so this is how this numerical is solved for reinforcement only. Okay, let us move on to another type of the reinforcement, another type of the numerical: a RCC beam of length 5 meter. Again a beam numerical is there. I think we will see it at last. वैसे ये हमने as we have seen all the beam solution, ये आप होमवर्क के लिए भी ले सकते हैं। ये 15 मार्क का आया है पहले। You can take the snapshot and you can submit me. A RCC beam of length 5 meters has an overall size of 230 by 350 millimeter. 4 numbers of 16 mm as tensile or the bent up reinforcement, out of which 2 are bent and the definitely 2 are straight 45 degrees. Supports from L by 4. The anchor bars are 2 numbers of 10 stirrups and all these things they are spacing. So try to submit me the steel reinforcement PCC कितना है और सेंटरिंग वर्क, फॉर्म वर्क। ठीक है, ये एक हम अभी आरसीसी लिंटेल का एक न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद में हम एक फाउंडेशन का न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, देन वी विल क्लोज आवर यूनिट फॉर टुडे। Estimate the quantity of RCC lintel and RCC sunshade. A lintel means this part which is above the wall up to 30 centimeters, और ये sunshade कैंटिलीवर बाहर आया है, इसकी लेंथ है 450 सेंटीमीटर, 4.5 meters. Okay, and its thickness is 45 millimeter. So let us see what are the various dimensions and what are the various details given. But very important that at least we should know how the calculations are done. So the details are given. Prepare a detailed estimate for RCC lintel and RCC sunshade over the door opening of 2.1 meter supported. Door opening is 2.1 meter, means the length of the lintel will be 2.1, as well as the shade also 2.1 meter, supported over a wall of thickness 23 centimeter. The details of the reinforcement is shown in the figure. Assume the cover has 20 millimeters throughout. कवर जो है ये reinforcement को कंक्रीट में ये 20 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑल साइड्स है, ये हमें एज्यूम करना है। ठीक है, अभी हम एक बार ये लिंटेल में जो reinforcement दिया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 2 bars are given of 8 millimeters phi. 5 बार जो दिए है वो 12 मिलीमीटर फाई के है ना, यहाँ पे दिख रहे हैं 3 और 2 5 और 2 7, 7 mm, 7 bars are there, out of which 2 bars are 8 mm फाई, टॉप के 2 बार, और नीचे में जो 5 बार है वो 5 नंबर है 12 mm फाई के, 12 mm डायमीटर के। ओके, इसमें भी 2 बेंट अप है और 3 स्ट्रेट है। ये जो 5 बार है 5 बार्स हैव 2 bent ups and the 3 straights. You have to read it from the drawing. And for this lintel beam, the stirrups are provided of 6 mm phi, 140 millimeter center to center. Okay, and slowly we should be able to get the idea of how the reinforcement are provided. This is about the lintel beam.
ठीक है, आरसीसी लिंटेल, you know that lintel is always provided for the window or door opening above the door or the window, so as to transfer the load of the brickwork above that lintel, above that opening. उसके लिए लिंटेल हम देते हैं, लिंटेल बीम, और उसको ही अटैच्ड विंडो है तो उसको अटैच्ड वी प्रोवाइड द छज्जा और सनशेड बोलते हैं उसको. So this sunshade is 45 centimeters of the length, 450 millimeters, and its thickness is very less, 0.45 meters or 4.5 centimeters. The lintel beam is of size 230 width है उसकी, and the depth we will see where it is mentioned. So we will see. We will move further. RCC lintel reinforcements are there. Then for this chhajja or for this RCC sunshade, the reinforcements are anchor bars 8 number 5, 8 millimeters 5, two numbers, stirrups, then RCC sunshade, main reinforcement 6 mm 5 at 170 center to center. So the main reinforcement is there. It is all along the length. That is 6 mm 5, 170, 5 mm 5 distribution reinforcement. Okay. So all these things together, let us move further. Now the again the measurement sheet for the calculation of the reinforcement. So first is the for the lintel beam, 12 mm 5 bars, main reinforcement, straight bars. The door size is given as 2.1 meters. So opening clear span of the lintel is 2.1. दोनों साइड में बेयरिंग रहेगा. Okay, the bearing is of as the wall thickness is 23, so it is taken as the 230 or 0.23 or 230 millimeters. So the length, straight length of the bar will be 2100 millimeters, 2100. That is the door size opening. 2 times the bearing, that is the wall thickness, 230 or 0.23 is the thickness of the wall. So 2 times the wall thickness minus 2 times the cover, clear cover. We have been asked or told that 20 millimeters is the clear cover on all sides. So 2 into 20. So the straight length of this bar is 2520 millimeter. ठीक है, या 2.520 meters. Now here we have to add the hook length. The additional hooks are provided. If provided तो हमें वो लेना है. अभी हम प्रैक्टिस के लिए हुक प्रोवाइड किए, समझ के चलते हैं, है ना, थोड़ा धीरे धीरे समझते जाइए. सो 2520 क्लियर लेंथ स्ट्रेट लेंथ प्लस 2 times 9.5, है ना, 18.5 हमको मालूम है. सो 2 into 9 into 12 mm is the diameter. So the deformed length or the total length of that reinforcement, straight main reinforcement with the hooks both side is 2736 millimeters, which is equal to 2.74 meters. Okay, we have been given that such 3 bars are there, total 6 main bars, out of which 3 bent up and 3 straight. So 2.74 into 3 is equal to 8.21 meter. Now we will move on to the bent up bars. 2 bars out of the 5, 3 are straight, 2 are the bent up. Now the clear length or the straight length is 2520 meter. We have worked out first item, plus 2 times the hooks, 2 into 9 into 12. Now for the additional length for bent or the crank, so 2 into 0.45 multiplied by depth of that beam. Okay, so beam depth is 23 centimeters or 230 millimeter minus the 20 millimeter or 2 centimeter cover on top, 2 on the bottom, so 4 centimeters or 40 millimeter. 230 minus 40 is 190. Okay,
So therefore 2 into 0.45 into that depth. This is not the diameter, small d. Okay, please recollect our earlier discussions. The difference between capital D and small d. जो हमने यहाँ पे लिया है टू इन द हुक्स के लिए 2 into 9 times द डायमीटर ऑफ द बार, लेकिन जो हम क्रैंक या बेंट अप एडिशनल लेंथ निकालते हैं फॉर द 45 डिग्रीज बेंट is 0.45 into 190, that is the depth excluding cover of the beam. Okay, and as the two bent ups are there, therefore 2 times, and the total comes as 2.91 meter. Again the two bars, 2.91 into 2, 5.81. So this is all about the 12 mm fibers. Now let us move for the 8 mm anchor bars. We have been given that the two top 8 mm anchor bars are there for the lintel beam. The straight length is 2520, 2520 plus again दोनों side के hooks, but the bar diameter is 8 mm. So 2 into 9 into 8, so 2664 millimeter is the length of that anchor bars at the top. Their total length is 2.66 meters. Two bars are there provided at the two ends. They are there to provide to hold the stirrups, इसलिए उनको एंकर बार करके बोलते हैं. स्टीरअप को अपनी जगह रखने के लिए वो बार यूज करते हैं इन एडिशन टू मेन बार्स. So 2.66 into 2 is 5.33, and I think that I need not go into that multiplication etc. The main thing for your understanding is the length and number of the bars. Now the stirrup at the beam size is, that lintel beam size is 230 centimeter by 230 millimeter, I am sorry, 230 millimeter by 230, that is 0.23 by 0.23. दोनों साइड की यानी चारों साइड की यदि कवर निकाले 2-2 सेंटीमीटर के और 20 मिलीमीटर के, तो the stirrup will have size 190 by 190 millimeter or 0.19 by 0.19 meters. Okay, four sides are there, so 190 into 4 is equal to 760. In addition to this 760, we will have to provide the two hooks. They are 2 into 9 into 6 because the stirrups are 6 mm high. So total length is 760 plus 2 into 9 into 6, that is 868 millimeters, 0.87 meters. Now the number of stirrups. The total door size is 2100 millimeter plus the both side bearing of the wall 2 into 230 minus both side cover 2 into 20 divided by, we have been said that the stirrups are provided at 140 millimeter center to center. So this total length of the lintel divided by center to center spacing plus 1. Always add plus 1. So that is 19.103. So you can take it as 20. So 20 into 0.87 will be 16.53. Okay. So in this way, we have found out the length of this reinforcement for the stirrups. So here, all the lintel beam part is over. Now we will move on to that RCC sunshade, or which we call as the छज्जा, CHAJJA, छज्जा बोलते हैं ना हम. खिड़की के ऊपर या जनरली खिड़की के ऊपर रहता है, या एखादे बार दरवाजे एक्सटर्नल दरवाजा है तो उसको भी दे सकते हैं. सो सनशेड अभी इसमें जो है वो 6 mm फाइव मेन बार्स है. दे आर 170 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर. The length of these bars will be, we have been given as 450 as the length of that 450 millimeter is the length of that chhajja or sunshade. 230 is the thickness of the wall. So the one side bearing is 230 or 0.23 minus the cover on both sides, on wall side and on the end side of the chhajja. So minus 20 into 2. So the main reinforcement bar's length
will be 640 millimeter. ठीक है, again 640 is the straight length. Add it to the hook only on one side, that is 1 into 9 into 6. So the length of that main bar for that chhajja, which is 6 pi as that has been given, is 694 or 0.69 meters. Now, how much number of these bars will be provided? The width of the chhajja is 45 450 millimeters, but the length of the chhajja is length of that door or the window, which is 2.1 meters or 2100 millimeter. Plus again the support on both side 230 into 2 minus the cover both side 2 into 20 divided by 170 centimeter center to center plus 1, again 16 numbers multiplied by length 0.69. So 10.92 is the length of the 6 pi reinforcement, मेन reinforcement. अभी ये छज्जा में ही डिस्ट्रीब्यूशन बार है, दे विल बी परपेंडिकुलर टू दी मेन रीइंफोर्समेंट जो है उसको परपेंडिकुलर रहेंगे, तो उसकी जो लेंथ रहेगी वो लेंथ विल बी द विड्थ ऑफ द डोर प्लस द एक्सटेंशन, that is 2 point it has been written here 230 one side bearing plus 450, that is no, sorry, we are into the distribution bar, so that will be 221 or 2100 plus both side bearing, that is 23 into 2 minus 20 into 2 the cover, and that comes as 2.52 meters or 252 सेंटीमीटर और 2520, ये यहाँ पे निकाला हमने 2520 millimeters, and such distribution bar are given as 5 numbers, so 2.52 into 5, that is 12.6. Okay, this is all about the 6 mm. And steel reinforcement 12 mm phi, that has been there for the again and the no 12 mm and the 8 mm and 6 mm, इनका सबका ये abstract है. 12 mm phi total length is 14.02 multiplied by 0.89 12.4, 8 mm 5.33 है ना, अभी जो ऊपर में हमने निकाला 12 8 and 6 all are clubbed together, total length is 8.21 plus 5.81 for 12, 14.02 multiplied by weight per meter 0.89 12.4, total weight 12.4 of the 12, वैसे ही 8 का निकाला वैसे ही 6 का निकाला है ना. आई विल नॉट रिपीट दिस कैलकुलेशंस अगेन एंड अगेन बिकॉज नाउ यू विल बी अंडरस्टैंडिंग, कम से कम जितने 10-12 लोग हैं उनके तो अच्छे से ख्याल में आया है. ठीक है, थोड़ा सा एक आधे बार इट बीइंग रिपीटेशन यू मे गेट बोर्ड, बट कीप योर मोटिवेशन चार्ज्ड बिकॉज बोरिंग विल नॉट ब्रिंग द थिंग्स इन योर ब्रेन. अब चलो आगे में चलते हैं. We have been asked to find out the quantity of the concrete. So PCC 136 for the lintel size है, एक lintel है 2.56 its length, again 2.1 plus both sides 0.23, so 2.56, width 0.23, height 0.23, 2.23 by 0.23 का lintel है, उसकी लंबाई 2.56 है. कैसे आया? तो 2.1 plus 0.23 bearing on one side, 0.23 bearing wall thickness, so 0.46 plus 2.1 2.56, so length breadth into depth 0.14, 136 की कंक्रीट की क्वांटिटी या लिंटेल की, सनशेड की क्वांटिटी, सनशेड का जो थिकनेस है वो एक साइड में 0.23 है थिकनेस ऑफ दैट बीम, और अनदर साइड इज 4.5 और 45 मिलीमीटर्स और 0.045 मीटर, दोनों का एवरेज डिवाइडेड 0.23 प्लस 0.045 by 2 0.14,
that is the length, multiplied by its width is 2.56. Again, as the length of the lintel 2.56, the thickness is 0.14, just we have worked out, multiplication 0.16, दोनों की summation will be concrete quantity of 136.0.3 cubic meter. Now the formwork, we will need the formwork for the lintel from both sides and the bottom, है ना. तो इसलिए ये फॉर्म वर्क भी हमारा एक आइटम ऑफ वर्क है, ये ध्यान में रखना. हमारे जो एस्टिमेशन है, तो इन एस्टिमेशन पर्पज एंड ऑल्सो फॉर द पेमेंट पर्पज, मेजरमेंट पर्पज ऑल्सो वी प्रोवाइड द फॉर्म वर्क. तो फॉर्म वर्क इंक्लूडिंग ये स्टेजिंग वगैरह रहता है. तो ये फॉर्म वर्क भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे बीम की साइज है, लिंटेल इज 0.23 बाय 0.23 बाय 2.56. 2.56 कैसा है मैंने बताया आपको. सो द लिंटेल बीम इज 2.56 is length and its section is 0.23 by 23. So excluding top side, ऊपर की साइड छोड़ के बाकी सब साइड में उसको फॉर्म वर्क आएगा. ठीक है, जैसे दो साइड है, उसकी लेंथ है 2.56 एंड हाइट इज 0.23. दोनों एंड जो है वो भी दो एंड है, उसकी विड्थ और हाइट 0.23 है. और बॉटम नीचे से भी सपोर्ट देना पड़ेगा, उसकी लेंथ है 2.1. अभी इसमें बेयरिंग नहीं आएगा क्योंकि दीवार के ऊपर नहीं देते हम सेंटरिंग, सिर्फ बीच में देते हैं, दो दीवारों के बीच में, विच इज ओपनिंग ऑफ द डोर 2.1. और उसकी विड्थ 0.23 है. सो 0.23 because the formwork is paid in meter square. So we have calculated this quantity in area meter square. Okay. Again I recall you that submit all these calculations going through the video or your notes. ये फॉर्म वर्क का कैसे, वैसे ही फॉर्म वर्क सन शेड के लिए, छज्जा के लिए बॉटम में उसकी लेंथ है 0.45 मीटर, उसकी विड्थ है 2.256, अगेन 2.1 प्लस जो भी दोनों साइड में थोड़े उसके प्रोजेक्शन है तो 2.256, इनका मल्टीप्लीकेशन भी नीचे से 1.02 फ्रॉम द साइड्स, दोनों साइड से भी उसको देना है जिसका थिकनेस है 0.14. इट इज समेशन ऑफ दैट, ये जो हमने यहाँ पे किया है 0.23 प्लस 0.045 by 2, दैट इज द एवरेज विड्थ ऑफ द साइड. दोनों साइड में है इसलिए 2 एंड बोथ एंड ओनली एट एक्सट्रीम एंड जहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का थिकनेस है. So 2 into 2.56 into 0.045. So this is the quantity of the form work. ठीक है, in this way we go for the another type of the structure like the lintel and the छज्जा. ठीक है, ऐसे ही बीम का एक न्यूमेरिकल है. Some numerical are column and the footing. Just I will slow it down for the video. ठीक है, please go through this numerical also and submit it to me separately. Estimate RCC column and for RCC footing, prepare a detailed estimate for RCC column and footing from the given figure. Assume covers as 25 mm sides on sides, बाजू में 25 mm and नीचे से from bottom 40 mm. Size of the footing 1.4 by 1.4 meters. Column size is 300 by 300 millimeters. All the other details are given. Okay. The concrete sizes are given. ये जो इसमें जो फाउंडेशन में है, तो it has been given that 10 millimeter phi reinforcement at 150 center to center both sides. है ना. ये जो नीचे में बताया गया है मेन reinforcement for the footing is 10 millimeters phi diameter, 150 center to center, 150 millimeter both ways. Okay. The size of the footing is 140 by 140. It has been given 1.4 meter by 1.4 meter. This is all about the footing and the reinforcement in the column. The column whose size is 30 by 30 centimeter, 0.3 by 0.3, and whose height is 3 meters.
ठीक है, हाइट इज 3 मीटर्स, 3000 मिलीमीटर यानी 3 मीटर। इसमें मेन रिइंफोर्समेंट जो है 4 बार्स है, 4 बार्स आर देयर ऑफ 12 mm फाया। 12 मिलीमीटर डायमीटर के 4 बार है, और 6 मिलीमीटर फाय एट 230 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर आर द डायमेंशंस ऑफ द स्टीरप्स। ठीक है, this is there. The solution also I will be showing. Okay, so you can solve and submit it to me. We will be stopping here.